ओके, टेलीस्कोप लगाओ, हेडिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का पर्पस क्या है? मतलब माइक्रोस्कोप तो एनलार्ज करने के लिए, टेलीस्कोप क्या है? बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, लाइक मून स्टार्स वगैरह देखने के टेलीस्कोप यूजफुल है। ओके, दैट इज द पर्पस ऑफ टेलीस्कोप। वी हैव टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, लगाओ हेडिंग टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। वन इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, other one is reflecting telescope. Astronomical telescope. And second one is terrestrial telescope. Okay, in this way we are studying majorly this one, astronomical telescope. Okay, astronomical telescope comes under refracting telescopes. Refracting means lenses we are using in this telescope. Okay, now reflecting means आपको we are using mirrors use करने वाला है, mirrors का. One is Newtonian telescope. Second one is okay. In this में only ray diagram थोड़ा useful है. That's it. ये वाला इसमें this is the only telescope में astronomical only they'll ask majorly. इसमें सिर्फ ray diagram में use करने वाला है. Reflecting है ना, we are using mirrors. We are using pairs of mirrors. And here they are using pairs of lens. Pairs of lens. Okay. So in that telescopes में आपको मैग्निफिकेशन ओनली दिल आस्क. मैग्निफिकेशन लिखो का डेफिनेशन लिखो. मैग्निफिकेशन इधर visual angle subtended by the final image. देखो definition, visual angle subtended by final image total by visual angle subtended by the object. Visual angle subtended by the object. B, okay, beta by alpha लिख दिया. मैग्निफिकेशन बीटा by alpha. Okay, now इसमें क्या होगा, आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखने का, राइट? सो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी बिगर. व्हाई? मोर रेस शुड कम एंड मीट. ओके, सो ऑब्जेक्टिव लेंस इतना बड़ा रहेगा. The compound में उल्टा है, राइट? कंपाउंड में उल्टा. ओके, एंड आईपीएस लेंस विल बी स्मॉलर. सो इन दिस में लेंस में ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी ऐसा आईपीएस ऑफ लेंस. सो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ज्यादा है, राइट? सो दैट high intensity bright image should form. That's why we are putting this objective lens. So इसका ray diagram find करके we are trying to find the magnification of this lens. Okay, so देखो the rays which are coming, the when you're seeing stars वगैरह में the rays are coming parallel to itself. The rays are coming बहुत दूर से, infinity से आएगा ना, so parallel to itself. So the rays coming like this from infinity से rays आएगा. Okay, थोड़ा bend हो जाएगा and somewhere here it meets. Okay, next ये वाला ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा रे इज कमिंग एंड मीटिंग हियर. इनफिनिटी से वैसा.
सी कभी भी रेस विच आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड पैरेलल टू इटसेल्फ ऑलवेज मीट बिलो द, और इस प्लेन में आपको लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन बोलते हैं। ओके, फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस पर गिरेगा। ओके, नॉर्मली क्या है, पैरेलल टू इटसेल्फ वाला क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, मीडिएट फोकस। बट द रेस विच आर पैरेलल टू देमसेल्फ बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज मीट एट ए फोकल प्लेन में गिरेगा। ओके, एंड बिलो द फोकस में रहेगा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट will like what virtual object for this lens. Okay, now either say again two rays will be coming, one is optical center se rays and one is parallel and passing to focus. Okay, fe, so इधर से मैं देख रहा हूँ, so they will meet somewhere, इधर मीट करेगा। dash b dash, this is okay, finally we can see the big star वगैरह देख सकते हैं। Now here, um, the angle subtended by the final image is beta. So this is beta. Okay, and angle subtended by the object wala angle subtended wala, this alpha. Okay, this is also alpha. Okay, now magnification formula क्या है? Beta by alpha, right? Beta by alpha. Okay, what is tan alpha? Opposite by adjacent. And this length is something but how much? This length is how much? Distance between optical center and the focus. Focal length of the focal length बोलते हैं। ओके, एंड दिस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यूई, राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ द आईपीस का लेंथ का। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज tan alpha? Tan alpha is this right angle triangle opposite by a dash b dash by adjacent is tan beta is opposite by ue, so a dash b dash by ue, so इसको बीटा बोलते हैं ना, स्मॉल ट्रायंगल को a dash b dash by ue. So if you divide this one, a dash b dash by ue by alpha is a dash b dash by fe fo. So a dash we cancel, fo by ue. इस जनरल फार्मूला आपको आ गया, जनरल फार्मूला आया। ओके, एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी हाउ मच? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप विल बी हाउ मच? ये दोनों डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, राइट? मॉड fo प्लस मॉड ue is called length. fo plus mod ue, देखो fo plus ue is length, but length of the telescope. Okay, देखो from this we'll derive the two cases. ओके, नाउ क्या है आपको? केस वन क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी में गिरे तो क्या होगा? ओके, केस वन लिखो। केस वन विल गेट मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, राइट?
maximum magnification. Okay, final image is formed at capital D. मतलब ये इस तरफ है ना, minus D आएगा. So when final image exactly D में गिरे तो we by using lens formula we are calculating. And U is nothing but UE because eyepiece का we are taking minus UE. And focal length को we called as FE. Now use the lens formula. Our interest is to calculate the magnification. From that, try to find 1 by UE is how much? Because magnification ka formula is FO by UE, right? Now use the formula. 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U. So 1 by FE is equal to 1 by minus D minus or plus 1 by UE. So therefore 1 by UE is equal to 1 by FE plus 1 by D. Now substitute this 1 by UE in the magnification. So maximum magnification at capital D, which is formed. The maximum magnification is equal to FO into 1 by UE. 1 by UE के जगह में 1 by FE plus 1 by D. So if you multiply FO also, therefore maximum magnification will be 1 plus by D. ये सब तेरा है ना, FO into ये वाला क्या है? So 1 by FE. Sorry. हाँ. तो FO by FE ले लो, बाहर ले लो. FO by FE. FO by FE बाहर ले लो. So क्या आएगा? 1 plus is the maximum magnification, which is formed at capital D. The formula. See, telescope will get formula in terms of focal length only. Focal length में आएगा. So FO by D, FE into 1 plus FE by D. Now same way, and this maximum magnification we call as strained eye, right? Strained eye. Now case 2 ले लो. Case 2 minimum magnification, and final image is formed at capital infinity. ले लो. Now try to derive the expression for magnification. Case 2 में minimum magnification. So final image is formed at infinity, and U is minus UE, and F is FE. Now try to find 1 by UE is how much, and then substitute in the general formula. One by infinity is 0 plus 1 by UE. Now therefore 1 by UE value आ गया ना. So magnification at which is formed at infinity is FO by UE, right? So FO by FE is the formula for magnification. देखो इधर ये पूरा सेकंड टर्म निकाल दो. FO by FE will be the minimum magnification. 1 plus वाला निकाल दो. FO by FE is minimum. So ray diagram लिया तो थोड़ा twisted questions also you can able to answer. ray diagram नहीं दिया तो थोड़ा नहीं आए तो only formula से डिपेंड नहीं होने का. So ray diagram का आपको learn करो. Sometimes individual lens formula लगा के भी also you can try to find, right? चलो मैं क्वेश्चंस करेंगे. फॉर्मूला तो आ गया ना. मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एंड इसको मिनिमम मैग्निफिकेशन को वी कॉल एज रिलैक्स्ड आई. रिलैक्स्ड आई बहुत दूर में आएगा ना इमेज, सो इट इज रिलैक्स्ड आई. Now try. They given the sum of focal length of two lenses FO plus of a telescope. They given as 105. They given the focal length of one lens is 20 times that of other. You tell me which one is 20 times that of other? Objective lens eyepiece in a telescope में. Telescope में object का बड़ा है ना. So I can write like this. FO is 20 times of FE. Task image is formed at D, and the final image is formed at capital D. He's asking what is the magnification is how much. Since the final image is formed at capital D,
It is called maximum magnification. Plus 24. 24. Yes. Okay. So got it. Got it? Okay. Now, length of telescope when the final image is formed at infinity, क्या होगा? Tell me. When the final image is formed at infinity, what will be length of telescope will be? नॉर्मल तो FO प्लस यूवी आएगा. अगर ये इन्फिनिटी आने के लिए this image should fall on the focus of the eyepiece, then only when the object at focus it is infinity, right? So that means इस लेंथ को क्या बोलते हैं? FE बोलते हैं. So that time क्या होगा? Length of telescope when the final image is formed at FO plus mod FE. When the image is formed at infinity. समझ में आ रहा है? When the image is formed at infinity, this is the formula we have to use, FO plus FE. So check करो whether it is forming at infinity या normal image या क्या है, maximum magnification में क्या है. Okay? Okay. Now question देखो. The given total magnification of the telescope for image normal adjustment बोलते हैं. Normal adjustment is nothing but infinity only. When the final image is formed at infinity, it's called normal adjustment. Okay. So normal adjustment में the given magnification is 100. The distance between the objective lens and eyepiece is 101 the given. Well, length is given. Distance between objective lens and eyepiece is nothing but length of the telescope. He is asking calculate the focal length of the objective lens and eyepiece lens. And you know length of the telescope when the final image is formed at infinity. So mod FO plus mod FE, right? कितना आपका? So magnification at infinity is FO by FE, right? FO is 100 times of FE. So substitute here. So 101 objective lens का focal length is more than the eye. Yeah.
नो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। टेलीस्कोप का वही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ज्यादा यही है। ओके, इंडिविजुअल रे डायग्राम आ जाए तो यू कैन यूज इंडिविजुअल लेंस फार्मूला, एनीथिंग यू कैन यूज। ओके, नेक्स्ट वन, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज द गिवन as 100 centimeters and eyepiece lens is 5 centimeters. If the final image is formed at D, you're asking magnification of a telescope and length of telescope. Length of telescope and magnifying power is how much? I'll give you options 24, 1 or 2. Got answer? कितना लेंथ आ गया सब लोग का? हाँ, तो लेंथ कितना है? 110. 110. ओके, magnification 24. लेंथ रॉन्ग, लेंथ बोलो, व्हाट फॉर्मूला यूज्ड? So लेंथ I का assumed हाँ, it has to be greater than 105 because it has to be greater than f0 plus fe. हाँ ऐसा भाई, when the image is formed at infinity that time 105, right? Right. Oh, Okay, but here so what is the length का formula? The formula to use mod fo plus mod ue we have to use length का, no use करो, ue is not given. By using lens formula you have to calculate ue and then substitute when the so समझ में आया question? So if you calculate minus ue and f is fe, now use the lens formula and solve the value of ue. Okay. so it is UE 25 by 24. 24. UE,
Yeah, 25 by 24. 25 by 24. Why 25 by 24? Using lens formula, 1 by 5 is equal to 1 by 1 by विच का किसका यूज करेगा? आईपीस का यूज करेगा. यू विल टेक द डिटेल्स ऑफ आईपीस, राइट? सो 1 by f इज इक्वल टू, ठीक है, 1 by f इज इक्वल टू 1 by v minus 1 by u. So 1 by fe, fe is 1 by 5, right? Is equal to 1 by minus d minus 25 minus 1 by minus of minus plus 1 by ue. So it is plus होगा ना, 1 by ue is equal to 1 by 5 plus 1 by 25. So कितना होगा ये दोनों ऐड करने से? एलसीएम ले लो. 25 is LCM, right? So 5 plus 1, 6 by 25. So उल्टा कहते हैं 25 by 6. 25 by 6 है. Now substitute how much that is? 6.6424 10 6 minus 6 6 530 4 4.65. Now add करो 4.115. So FO plus 100 plus 104 आएगा. Okay, sure. Now some disadvantages are there in this one. कौन सा? Refracting telescope में some disadvantages are there. Okay, what are disadvantages? Tell me. What are the disadvantages of having refracting telescope? One is आपको ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, बल्कि है, आपको मतलब लेके आने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत कॉस्ट होगा, कॉस्टली आल्सो. सो बल्कि है, कॉस्टली है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाला आपको दो थिंग्स है. वन इज कॉल्ड स्पेरिकल एबिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल आस्क समटाइम्स. स्पेरिकल एबिरेशन. Spherical aberration is आपको lenses we are using, right? We have two rays, marginal rays and paraxial rays. Marginal rays means very far wala, and paraxial rays means very near to the principal axis. Okay, far wala क्या करेगा? It is the उसका focus will be less distance में. This is focus of the marginal rays. and ये वाला converge करके focus of the paraxial rays. Okay, वही आपको इसके वजह से क्या होगा? Many images are formed. Okay, लिखो. Many images are formed of low intensity brightness. Many images are formed of low intensity brightness. Low intensity or brightness. मतलब मून को देखे तो आपको मेनी इमेजेस आर फॉर्म. इधर मून, इधर मून, इधर मून, इधर मून, शेड होता जाएगा डिफरेंट मून्स, और उसमें ओरिजिनल क्या है समझ में नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल एब्रेशन. These are disadvantages. That's why we are going for mirrors. Okay. Next, second disadvantage क्या है? Chromatic aberration. Chromatic aberrations. Chromatic aberration. Chromatic aberration में क्या होगा? You know, refractive index is inverse proportional to wavelength. Okay. Now tell me, किसका wavelength, violet का wavelength ज्यादा converge होगा, और violet का less wavelength, right? Less wavelength. So उसका refractive index is more. If refractive index is more, focal length क्या होगा? 1 by f is equal to लेंस फॉर्मूला क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू 1 by r1 minus 1 by r2, right? म्यू इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्डा. नाउ टेल मी, वेवलेंथ का फोकल लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा कि मोर? वेवलेंथ वॉलेट का लेस है, म्यू का मोर है. इफ म्यू इज मोर, फोकल लेंथ इज लेस, इनवर्स प्रोपोर्शनल. सो वॉलेट का विल कम हियर, फोकस ऑफ द वॉलेट है. एंड रेड का क्या होगा? रेड का मीट हियर, दूर में आएगा. फोकस ऑफ रेड, फोकल लेंथ इंक्रीज होने से रेड का दूर जाएगा. दैट मीन्स क्या होगा? इसमें डिफरेंट कलर्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ. ओके, मतलब आपको मून का देखे तो रेड, वायलेट मून, इंडिगो मून, रेड मून, व्हाइट मून, सब कुछ मून आ रहे, क्या हो रहा है बोल के. मुझे तो टेलीस्कोप दिखने का, दे विल थिंक दैट इतना सारा मून आते हैं. दैट इज अ डिसएडवांटेज.
Okay, it's called chromatic. Name is chrome, means colors. Colors दिख रहे. Okay, that's why we are going for the Newton reflecting telescope. Okay, न्यूटोनियन एंड कैसिग्रेन का. आपको कैसिग्रेन का एक ही लर्न करो डायग्राम का, दैट्स इट. तो कुछ नहीं, न्यूटन का नहीं आएगा कुछ. ओके, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में दे आर यूजिंग मिरर्स टू अवॉइड. मिरर्स यूज करने से क्या होगा? देयर इज नो स्फेरिकल एब्रेशन, देयर इज नो क्रोमैटिक एब्रेशन. रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, इट इज इजी. सो लिखो कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. इसका ओनली रे डायग्राम आपको लर्न करना पड़ेगा. सो हियर मिरर है, एक इधर मिरर है बट थोड़ा गैप है. ओके, एक कॉनकेव मिरर है. में क्या होगा? पैरेलल रेस आएगा. So what will happen if the parallel rays are coming? What will happen? It will reflect. Okay. If it is not, there is no mirror here. If there is no mirror, it would have gone up here to meet at focus. Right? Here also, ray is coming. If there is no mirror, it will reflect and it will appear to meet through focus. But if the mirror is there, so reflect करके इधर जा रहा है, इधर करके इधर जा रहा है. Okay. Now rays are passing through the convex lens, small lens, which is eyepiece lens directly we are putting. So क्या होगा? फोकस में गिर रहे, फोकस के ये तो पैरेलल आ जाएगा. We are seeing from here. Okay. Now this is eyepiece, small aperture we are using, and we can see the there is no spherical aberration, there is no chromatic aberration from this. This is a diagram. Cassegrain का देखो मिरर्स, दो मिरर्स यूज कर रहे हैं, एक छोटा सा लेंस यूज कर रहे हैं फॉर आईपीस के लिए. दोनों मीट एट वन पॉइंट एंड पैरेलल रेस आएगा. वी कैन सी एग्जैक्टली मून वेयर इट इज बोल के. ओके, here image is formed, इधर image is formed, final image is formed there. Exactly. And here iska formula also, though magnification which is same as that of telescope only, FO by FE into 1 plus FE by D, same formula we use. And magnification at infinity is 1 plus nikal do, FO by FE. Same formula will be there for this magnification ka. And here FO is how much? Since mirror, objective lens ka, it is mirror, that's why it is radius by 2. R equal to F, right? We have to use here R by 2. Okay. Where is optical instrument is done? पूरा लेंसेस से ये हफ्ते में हो जाएगा ना, पूरा करो करो. 2 क्वेश्चंस आ जाएगा, लाइफ चेंजिंग वाला चैप्टर है. दिस 2 क्वेश्चंस हर टेस्ट में. मेक श्योर दैट री ऑप्टिक्स में ईच एवरी क्वेश्चन, स्कूल एग्जाम कभी भी लगाए तभी री ऑप्टिक्स में फुल मार्क्स आने का कैसे भी. इससे ज्यादा नहीं, ये ही टॉपिक्स है पूरा नोट्स में अभी जो है, दैट ओनली टॉपिक्स विल बी देयर, इससे ज्यादा नहीं है. वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन में इधर उधर पूछेगा, व्हेन यू आर डूइंग पीवाईक्यूज कवर हो जाएगा. ओके. नाउ छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिस्पर्शन बोल के लगाओ हेडिंग. डिस्पर्शन, डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम वो तो 10th क्लास का है, देखेंगे. डिस्पर्शन मीन्स पढ़ा होगा ना, लाइक splitting of light, like वो colors change split होगा ना, that is called dispersion. लिखो the phenomenon of splitting of white light, the phenomenon of splitting of white light into its component colors, into its component colors on passing through refracting medium, on passing through refracting medium is called as dispersion. इस फिनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स, प्रिज्म से देखे तो कलर्स आएगा ना, स्प्लिट होगा ना, दैट फिनोमेनन को वी कॉल्ड एज dispersion. And the band of colors which we obtain on the screen are called as, this phenomenon ko we called as spectrum. Spectrum is band of colors which is obtained on the screen is called spectrum. And ऊपर which color आएगा? Violet or red? टॉप में
रेड रेड आएगा, इसमें वॉयलेट आएगा। फिक्टर नो, प्रिज्म का ऑलरेडी भी स्टडीड राइट, ये याद है, उसमें फॉर्मूला याद है ना? This angle of incidence, this angle of prism, R1, R2, this angle of emergence. And if there is no prism, it would have gone straight. Because of this, it got deviated. This is called delta, angle of deviation. This will we learn. Okay. And what is the relation between angle of prism and A is equal to R1 plus R2? And delta is equal to क्या आएगा? I plus E minus A. This is the formula we learned in the prism. I plus E minus A. Okay. Now here we are studying very small angle prism. Small angle prism. Like heading small angle prism. Okay. चलो. Small इसका refractive index मान लो mu. Okay. So first we'll take one surface XY and XZ मान लो. XY surface का ले रहे हैं. Small angle prism लगा heading. Small angle prism में XY surface में try to apply Snell's law. 1 into sin I is equal to इसका refractive index mu into sin R1. Okay. And for since it is small angle कभी भी sin I को sin of theta को we call as theta, right? Small angle में. So replace करो इधर 1 into I is equal to mu times of R1. First equation. So I is equal to mu times of R1, right? Now similarly next surface ले लो, XZ surface ले लो, XZ surface. Now इसका सम, so mu into sin R2 is equal to 1 into sin E. So since it's small angle prism, mu times of R2 is equal to E. Second equation. Okay. I and E आ गया. Now substitute in this formula में. Just 2, 1 and 2 equations in delta में substitute करो. We'll get the answer. Angle of deviation we'll find, try to find. For a very small angle prism, we are trying to find angle of deviation. Angle of deviation formula क्या है? I plus E minus A. I is how much? Mu R1. From second equation, what is E is equal to mu R2 minus A. Mu times of common ले तो R1 plus R2 minus, okay, कितना होगा? Minus A. And what is R1 plus R2 from this? A. So therefore, delta is equal to mu A minus A. So mu common ले लो, A common ले लो, mu minus 1. You can write like this. Mu minus 1 times of A. This is the formula we learned. Angle of small, very formula statement डाल दिया. Very small angle prism में we have to use the angle of division formula is mu minus 1 times of A. They will tell question में mention करेगा very small angle prism बोल के. Okay. और 1 degree 2 degree दिया तो भी आपको ये आएगा, समझ में आएगा. Angle of prism is very small बोल के. This is the angle of deviation when we use this formula only one small angle prism में. Okay. Now here you tell me refractive index and wavelength are inverse relation, right? किसका refractive index is more in Vibgyor में? किसका refractive index is more? Vibgyor में violet, correct? Wavelength is less, and refractive index is more. Inverse relation, right? So I can write like this in Vibgyor में. When I take the average of the wavelengths, generally, kiska wavelength will match, yellow will match always. Wavelength terms mein, if I take the average, yellow will be matching always. Okay. So you can write like this, violet greater than refractive index of yellow greater than refractive index of red. Right? This is a sequence we learned. And inverse relation with the wavelength. Angle of deviation also tell me. Angle of deviation depends on what? Mu minus 1 times of A. Depends on mu, right? Direct relation. So therefore, delta of V greater than delta of Y, yellow ka.
is greater than delta of r, right? Direct relation है ना? देखो mu, as mu increases delta n is increasing, the small angle prism में. Okay, now if they ask sometimes angle of yellow color का अगर पूछेगा तो sometimes yellow का is equal to average of the delta of violet plus delta of red by 2 करने से आपको angle of division of yellow color का आएगा. Sometimes they will not give angle of division for yellow, आपको average करना पड़ेगा violet red by 2, and this is called mean deviation. Mean deviation. So we learned delta का formula mu minus 1 times of a, and from this direct relation आ गया, that's why direct relation use कर दिया. Sometimes average करके ये yellow color का आ जाएगा. Okay, now heading लगो angle of dispersion. Angle of dispersion or angle of dispersion को we call as theta. Theta से रिप्रेजेंट करेगा angle of theta. So first definition लिखो, इसका angle of dispersion को कैलकुलेट करेंगे. The angular separation, लिखो definition, the angular separation between the two extreme colors. The angular separation between the two extreme colors in the spectrum is called angular dispersion. Angular separation between two extreme colors. Exam में bracket में violet and red. उस separation को we call as angle of dispersion theta. Okay. देखो the if there is no prism it would have gone straight ऐसा. So this is what angular division of what delta of r. इसको क्या बोलते हैं? Delta of v. And angle of dispersion क्या है? The angular separation between two extreme colors. मतलब ये वाला two extreme colors का बीच का angle. This is theta. Is asking. This one is asking theta. Okay. The angular separation between two extreme colors. This one. So therefore theta is equal to delta of v minus delta of r. Right? This is called angle of dispersion. Okay. You know this formula, delta is equal to mu minus 1 times of a. You tell me delta v कितना होगा? Mu v minus 1 times of a क्या होगा? And delta r कितना होगा? Mu r minus 1 times of a. So substitute here in this formula में delta v, मतलब a कॉमन ले तो क्या होगा? ठीक है, delta v के जगह में mu v minus 1 times of a minus delta r के जगह में mu r minus 1 times of a. So take a common, what will get? माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर टाइम्स ऑफ ए is a formula for angle of dispersion. Angle of dispersion formula in terms of refractive index. In terms of angular division में ये formula delta v minus delta r. This is a basic definition. From this refractive index terms में आ गया mu minus mu r times of r. ये formula important आपको. Okay, directly they'll give refractive index or values will be given, angle of prism will be given. That two angle of prism में they'll give like 5 degree, 10 degree ऐसे देगा. So from this you can understand that small angle prism है that formula use कर. Okay, last one is dispersive power. Definition लिखो, dispersive power. Bracket में omega. Dispersive power we call as omega. लिखो definition. It is a ratio of angular dispersion to the mean deviation. It is a ratio of angular dispersion to the mean deviation. So omega is angular dispersion by mean deviation. Okay, angular dispersion का formula मालूम है, delta v minus delta r by delta of mean, you know, which is nothing but delta of angular deviation क्या है? Y, right? Yellow color का, right? In spectrum में. And you know what is the formula for delta v minus delta r का? We after deriving what you got? Mu v minus mu r into a वाला, and नीचे वाला भी a में निकल जाएगा. ये वायलेट का क्या होगा? डेल्टा वायलेट का म्यू वाई माइनस 1. ए का गेट कैंसिल हो जाएगा. Okay, this is a formula for dispersive power, and we don't have any units. इसका units नहीं है. Okay,
एंड समटाइम्स आपको म्यू वाई नहीं दिया तो क्या करेंगे, म्यू वाई का कैसा आएगा, चल में म्यू वाई नहीं दिया तो म्यू आर प्लस म्यू वी बाई टू, डेल्टा वाई नहीं दिया तो डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी बाई टू। एवरेज लेने का येलो कलर का ऑलवेज। कैलकुलेट करो। एंगल ऑफ प्रिज्म दे गिवन एज 10 degrees, mu r they given as 1.58, and mu v also they given as 1.71, and mu y also they given as 1.65. He's asking angular dispersion theta and dispersion power is omega is how much. So we know theta in terms of mu terms में मालूम है, यूज करो फॉर्मूला। Is it 1.3 degrees and 0.2? Yes, 1.3 and 0.2 is answer. So with this your complete ray optics done successfully. इससे ज्यादा नहीं है, किधर भी जाओ, कोई भी बुक जाओ, HC वर्मा पकड़ो, कोई पकड़ो, your wish.